Yeah, that's right. Thank you so much for a very loud introduction. My name is Sumukhi Suresh. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ कॉमेडी करने वाली हूँ, आपके लिए कॉमेडी करने वाली हूँ. एंड इनफैक्ट विमेंस डे इज कमिंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर मी. हम पूरे साल का बोनी अभी करते हैं बिकॉज एवरीवन रिमेंबर्स कि अरे ये लोग बचे हैं, इन लोग को डाल दो. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, दो शो हर दिन. एंड ऑल्सो इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा ट्रोलिंग होती है कि ओह लड़कियां सिर्फ बूब्स और वजाइना के बारे में बात करती हैं, सिर्फ ब्रास के बारे में बात करती हैं. एंड मैं आई अग्री विथ यू, ब्रास के बारे में तो जोक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली माई ब्रास बिकॉज दे वेरी एक्सपेंसिव. मैं तो इनफैक्ट 4000 वाले ब्रास खरीद रही हूँ और 4000 मजाक नहीं होता है. ऐसी चीजों पे बात करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है. सो आई कंप्लीटली अग्री. एंड इवन इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स पीपल आर सेइंग कि आप प्लीज आप पीरियड्स पे ही जोक करते हो. इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज मुझे पीसीओडी है, मुझे पीरियड नहीं आते. इनफैक्ट द जोक इज कि मुझे नहीं आते. तो जब पीरियड पे जोक होते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं. जब ये लोग बोल रहे हैं ना कि पीएमएस हो रहा है, मुझे आई एम लाइक मुझे कुछ नहीं हो रहा है. ओके मोस्ट मैं तो एमएस भी नहीं कर पाई, पीईएमएस तो इट्स इम्पॉसिबल. एंड इन टर्म्स ऑफ ओ थैंक यू, वेरी बैड फेक लाफ्टर, वेरी बैड, बट आई अप्रिशिएट इट. इसीलिए मैं कह रही थी कि हमें इस पे जोक्स करना ही नहीं चाहिए. और वजाना पे जोक्स अभी मैंने वजाना पे जोक्स कर दी तो एफआईआर शायद. ओके गुड टाइमिंग, थैंक यू. Great. थैंक यू This सो is मच. not that show. या था. You are required in that room. ओह We are- इसीलिए इतने yeah, लाफ्टर yeah, नहीं आ रहे थे. yeah, सिट yeah, थैंक yeah. गॉड. Exactly. मैं बहुत डर गई. Wow. Welcome to the Male Feminist. You will see us there. 36B. Three of us were walking, and there's this guy who was clearly shadowing us, and then he stood across us at some point. साइकिल से उतरा खड़ा, and he flashed his penis, and he, of course, ऊपर नीचे just bringing it towards us. My mom raised me the way her mom raised, which is bad. Because they are very like, oh, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. I'm prepping you to manage someone else's house. She proudly told people कि हमारी बच्ची को किचन संभालना आता है, वो घर संभाल लेती है और वो सिर्फ 10 साल की है या 12 साल की है. Lot of my big girlfriends or big female acquaintances, boys love to keep us as a secret sometimes. Like it's the fetish sometimes. And my gut knows this, that I'm like, oh, you want to keep me as a secret. And that reason is multiple. It's either shame, और इट्स आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस. मुझे तो सच में पसंद है, लेकिन टीवी ने मुझे सिखाया है कि मेरी बंदी तो रानी मुखर्जी फ्रॉम कोई मिल गया होनी चाहिए. प्लेन में तो ओ बिटवीन टू सीट्स uncles are really enjoying themselves because the hand comes like this. No, okay. It's also just too, you can't expect because the immediate reaction is fear. The immediate reaction is shut down. The immediate reaction is कि like पकड़ लिया तो oh shit. First they will like पकड़ लिया. Then there's pain. Then they're like oh shit, it's paining. He held my boob. It's fine. It's not rape. That's not how it works. I was massively big girl, like insanely big girl. तो I remember कोई तो लेटर आया था सबको और कहा था कि कॉन्फिडेंशियल सिर्फ पेरेंट्स को ओपन करना है. Oh my God, लिंकअप्स के बारे में हमारे पेरेंट्स को बताने वाले. तो मैंने भी कहा हाँ मुझे भी देख लेना चाहिए. और बंदे एक मुझे याद है वो लड़के का, मैं उसका लड़का नाम नहीं लूंगी उसका. तेरा नाम क्यों लेगा कोई? दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम ओनली. अच्छा हुआ तो इन सबसे हट गई. फॉर हिम ही इज लाइक डोंट वरी, you are not part of this list because you are ugly. This list is only for hot people. I was just, मुझे अभी भी याद है वो. देखिए आप लोगों ने देख ही लिया है, इतनी हट के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की क्योंकि पावर हाउस ऑफ टैलेंट है हमारे साथ. राइटर, एंटरप्रेन्योर, एक्टर, होस्ट, कॉमिक एंड दिस hormonal chick is with us. Welcome to the Male Feminist, super powered by Clovia. क्या हाल है आपके? I'm very happy to be here. मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं. Yay! Yeah, and I was like, what about me? मैं भी मेरे हार्मोन्स की वजह से मेल फेमिनिस्ट ही हूँ, तो आप मुझे ही बुला लो. Sorry. So I'm very happy to be here as a male feminist with my testosterone. Sorry. क्या बात है. देखिए आपको ये समझाना पड़ेगा कि हम लोग कॉमेडी की भी बात करेंगे लेकिन इनकी जर्नी के बारे में ज्यादा बताएंगे क्योंकि आई डोंट नो कितने लोगों को पता है क्योंकि आई वाज 20 years old to learn that you're not from down south. You were born in No, I'm Nagpur. from, yeah, but I mean, I'm a Tamilian, but I was raised in Nagpur. That's right. That's Correct. true. Yes, correct. तो नागपुर में एक लड़की का जीवन कैसा होता था? नागपुर was actually मैं छोटी शहर की लड़की हूँ because Nagpur How? is yeah because नागपुर छोटा शहर, नॉट सो मच शहर. फेमिनिज्म लेट आया, अंग्रेजी म्यूजिक लेट आया, हिंदी म्यूजिक ऑन टाइम. यू नो इट वाज वेरी गणपति मंडल में दोस्त मिलते हैं, डांस करना पड़ता है. और स्कूल का जो वसंतराव देशपांडे हॉल में अगर कोई कल्चरल्स है तो वहां पे अपना जलवा दिखाना पड़ता है. तो मैं गाना और डांस दोनों करती थी, पर मुझे डांस करने नहीं देते थे क्योंकि एक तो बिग गर्ल ना, तो वो विजुअली दे हमें अच्छा लगता, तुम गा लो. पर मैं फिर भी नाचती थी. घर में आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस. हमारी घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी. लाइक वी वर not no money at all. Middle class is like
it's too much for us. Yeah. So like the money was too low. तो मैं घर manage कर रही थी. मेरी मम्मी पढ़ रही थी CA के लिए. मेरी मम्मी job भी कर रही थी. So in fact, yeah, it was a lot for her. तो I was the girl who took care of the खाना and the घर का सफाई and कपड़ा and all of that. मेरे भाई भी कर रहे थे, but my big brother, no, he was my mom's support because बहुत, I think, since it was so too hectic, you need that one person to be her friend. So I think he was my friend. He really took that mantle कि मैं देख लूँगा. But safe share for girls? Yeah, 100%. Oh yeah. But वहाँ पर मैं क्यों जाऊँ 6 बजे के बाहर? मतलब आप आ जाती थी घर? हाँ, मैं 6 बजे के बाद मैं क्या ही कर लूंगी, राइट? तो मैक्स तुम किसी दोस्त के घर जा सकते हो, और एटलीस्ट दैट्स अलाउड थे? नहीं, उन लोग को अलाउड था. मैं उनको देखती थी कि ओ आप लोग एक दूसरे के घर जा रहे हो, वेरी गुड. फोमो नहीं होता था? बहुत, क्योंकि मैं शाम को आई हैव टू who'll cook dinner. So I also have to be back for like home. So I was slightly cut away from that teenage of my life because I think I grew up faster because we were all responsible for home. Yeah. And not only all 5 of us, my parents and all of us split duties. And so I think Nagpur was I was telling someone कि I've been born and raised actually very well to take care of the house. I'm a very good homemaker. And I actually am. Then 18 से मेरा actual बचपन and life and everything शुरू हुआ. यार तो जो सेफ्टी होती है इस शहर की, उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं. तो कभी रास्ते चलते आपको रियलाइज हुआ कि मैं लड़की हूँ, और क्योंकि ये दुनिया ने आपको बताया इसीलिए पता चला क्या कुछ कभी अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ रास्ते पे? हाँ, was Nagpur only where first was, I think I remember we were walking, 3 of us were walking. It's slightly dark but funny. But we were walking on the road and there's this guy who was clearly shadowing us, and then he stood across us at some point, cycle से उतरा खड़ा, and he flashed his penis, and he, of course, ऊपर नीचे just winging it towards us. And the 3 of us were walking, and we're like, oh shit. हम लोग चल रहे थे, फिर he of course zipped himself up, and वो साइकिल से फिर से चलने लगा, और फिर उसने हम तीनों में एक गोरी लड़की थी, ठीक है? Then he's like, मुझे तो गोरी वाली ही चाहिए, और चला गया. And the 3 of us were like, मैं शो पे बोल रहा हूँ बार 100-125 एपिसोड से कि कोई एक कभी महिला आ जाए जो बोले मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कई सारी छुटमुट चीजें तो आपने हाइजीन में ब्रश कर दी हैं. या बट कैन आई टेल यू सर, आई फील लाइक मैंने बहुत सारी जगह बोला कि नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, बट एक्चुअली मेरे साथ हुआ है. लेटर व्हेन आई एम टॉकिंग टू अदर वुमेन, आई एम लाइक ओह ये ऐसा था. लाइक वेयर देयर आई रिमेंबर एक बार बिल्डिंग में सम मैन वाज लाइक मुझे स्कूटर को पार्क करने में मदद कर दो, और फिर उसने मुझे बिठाया था, एंड देन आई कैन क्लियरली सी ही इज रेजिंग माय फ्रॉक, एंड आई डिडंट रियलाइज, आई वाज वेरी यंग. And another friend of mine was like, no, leave. And I ran. And I never considered that as something untowards or an inappropriate incident. Much later, I was like, hey, 1 minute. That was not right. Because we see the worst, right? If you see on pop culture or social media or any news channel, you see the worst ever treatment. And then you feel grateful that, oh, thank God, मेरे साथ उतना तो नहीं हुआ. So your pain threshold is only increased. Yeah. Like तुम्हारा basic ही, a lot of women are also walking with the basic thing of like, बस आज उतना ना हो जाए. वो थोड़ा हाथ, like, मतलब बस या ट्रेन में कभी हाँ चलो छू दिया छींकी तो that's fine. चलो ठीक है उतना ही हुआ. Thank God it wasn't worse. Which is so sad. Which is not how I don't wish for my niece to have. Yeah, like I would be okay with it. But if my niece comes up, oh man, I would go live it. So I mean public transport तो सब यूज करेंगे ही ना. अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो प्लेन में भी हो सकता है. Yeah. Oh my God. प्लेन में तो between 2 seats. But uncles are really enjoying themselves because the hand comes like this. No, okay. Really? Yeah, because seat के मतलब आपको क्या खुशी मिल रही है आपकी नाखूनों से जो करके आपने किया ये? वो चमाट मारे तो बहुत सारी लड़कियां मारती है, but you know it's also just too, you can't expect because the immediate reaction is fear. The immediate reaction is shut down. The immediate reaction is कि like पकड़ लिया तो oh shit. First they will like पकड़ लिया. Then there's pain. Then they're like, oh shit, it's paining. Then it's realization. Then it's like, he held my boob. It's fine. It's not rape. That's not how it works. There is just so many thoughts that go into your mind. Yeah. That of course it's a delayed reaction. Of course some women are not hitting immediately. Some are. बचपन में 2 भाई 1 बहन, कैसे पेरेंट्स लड़कों को अलग रेज करते हैं और कैसे लड़कियों को? There's definitely a difference, but I think थोड़ा confusing, strangely different भी था because my dad's a feminist. My dad's a full feminist. Like you've seen him fight? Yeah. It's, you know, see, fighting is there, but imagine a male feminist who is in action, जो करके दिखा रहा है तुम्हें feminism. वो तो उदाहरण, my mother in fact finished BCom, married my dad. 1991 or 1988 हम लोग नागपुर गए. 1990 my father was like, तू क्या कर रही है? You're very smart. So why don't you study? And mom's like, what do you mean?
मैं तो अच्छी बीवी हूँ, and my father's like whatever babe, please पढ़ाई कर ले. My mom did her chartered accountancy after Yeah. giving birth मैं to जब ये सुना तक yeah, मेरे को वो all of फिट us. नहीं हुआ मेरे Yeah, my mom. अंडरस्टैंडिंग ऑफ देसी हाउस होल्ड में. अब लाइक क्या बोल के गई, इसमें मैं आऊंगा. Yeah, because my dad was like, मुझसे तो नहीं होगा पढ़ाई, इतना दिमाग है तुझमें तो please CA कर. Very cool. Yeah, so it was, and it also started with like not only my dad's dad, my grandfather, who told my mom saying that he was saying कि बैंक में नौकरी कर ले, कुछ और कर ले, and she was very like नहीं, and then the same thing I think moved with my dad going, yeah, please study. Yeah. My mom didn't know English हिंदी उतना नहीं पता था मेरी मम्मी को. My dad taught her all of this. He gave her comic books and all. So he's like, चल पढ़ ले खत्म कर दे. And he didn't do it because he's like, I'm letting my wife do. If you go ask him, no, saying कि wow, how did you allow his, he'll be very like, I don't understand what he's saying. Like he gets truly confused हो जाते हैं वो. Boss. हाँ, he's very like, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं मुझसे पढ़ाई नहीं होगा. मैं बुद्धू हूँ, वो नहीं है, तो वो पढ़ाई करे, मैं क्यों पढ़ाई करूँ? He was very like, मुझे पढ़ाई नहीं करनी. And we were like, कोई बोल नहीं रहा आपसे पढ़ाई करने के लिए. बहुत सुंदर. The biggest feminist I know is my father. My father also believed that अगर लड़की की परवरिश मम्मियों को करनी चाहिए. But he was also not okay with it. Yeah. And but since he got into a funk, his power reduced. In his head, he was not as powerful as he thought he was. And my mom really took over. And my mom raised me the way her mom raised, which is bad because they are very like, oh, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. I'm prepping you to manage someone else's house. Correct. तो वो तो था. But again, my brothers were not very alpha male. No, they were proper feminist male. Because father is feminist. Yeah. So it's all everyone in my family shows two traits. Yeah. Except for my father who's single straight male feminist. Perfect. It's very that. बहुत सुंदर. Can you go back to things कि ये patriarchy सिखाई गई, ये patriarchy सिखाई गई? When I was 7 years old, first standard, I started cooking. And I mean, as much as it was a requirement और हमें ज़रूरत थी, but it's also because my mother was so happy. She proudly told people कि हमारी बच्ची को किचन संभालना आता है, वो घर संभाल लेती है और वो सिर्फ 10 साल की है या 12 साल की है. And as much as it is a skill, and honestly best skill I have learned, क्योंकि घर संभालना, खाना बनाना, मैं अकेले रहती हूँ अभी, it's sorted. But उस वक्त वो compliment skill की तरफ से नहीं आया था. Like वो बताया गया था कि अरे तैयार है ये अभी से तैयार है. Like अगर मैं चली जाऊँ ना तो अभी 10-20 लोगों का खाना बना सकती है. Which didn't come from the space of she's so skilled, like she can be a chef. Catering का धंधा खोलेगी. Yeah, never. It was very like she's gonna keep her husband really happy. Yeah. And also, you know, the simple stuff like my period came in late when I was 16. And my mother's biggest fear was that jaldi nahi aaya, which means that my, you know, reproductive health is bad. Chances of me having a baby is low. She said, oh, that's not a good idea. फिर कैसे बताएंगे क्योंकि अगर, you know, if you're barren, then that's the worst. And I think I was barren forever. Like from 16, it always was an issue कि मैं बांझी थी. So there were signs from one way. Exactly. So, you know, when I could see her fear. Like at that time, she didn't look at it as a medical problem. She looked at it as, oh no, this was my responsibility. Yeah. Like अब मैं ससुराल को क्या बोलूँगी? But she's also confused because she got education in. When she got CA in, काम करने लगी तो उनका actually नजरिया बदल गया था. But she was too scared to apply it to me because इतना जोर से लड़के आप जब बहुत जोर की लड़ाई में होते हो ना, फिर रिट्रैक्ट नहीं कर सकते. Exactly, yeah. और फिर अगर मेरी मम्मी ने नया कुछ तरीका ट्राई किया मुझे रेस करने के लिए और वो फेल हुआ तो गई. So she was like no, tried and tested मैं कर लेती हूँ. And her whole thing is तो शादी के बाद जो करना है कर. तो 21 में शादी कर लेना. And after that it is his authorized signatory has gone to him. It is his problem. It's not my problem. So वो सब तो यार it was very clearly demarcated. And also simple stuff ना कि घर जल्दी आ जाओ. As much as it's a safety thing. But the moment you tell girls to come home early, you have already started putting fear in them. And it applies itself in so many things. आप risk appetite लड़कियों का कम भी होता है कुछ लड़कियों का because you're constantly like oh shit but नहीं मैं 6 बजे नहीं जाऊंगी मम्मी ने बोला. नहीं आप लोग कमेंट्स में बताओ कितनी आपकी महिला फ्रेंड्स हैं जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है. Exactly. And I have met them now recently, but I've also met my own kind. Ask them now when their risk appetite changed. That's actually when because my risk appetite I think changed at 33. Actually, it was my first ever my gynec appointment. I came out of it and I was like, okay, fuck this. That's it. I'm going for it. I'm taking all the risk that I want to. Actually, that's unfair. But 33 consciously मुझे समझ आया था कि हाँ अब तो रिस्क एपेटाइट बढ़ गया. स्विच या एग्जैक्टली करेक्ट. अब सही बोल रहे हो. गाड़ी चलाते समय लड़की लोग कितना आगे करती है अपनी सीट. ऐसा क्यों चलाती है? क्योंकि उनको इतना टेंशन है कि मुझे अपना पूरा गाड़ी का हर कोना देखना है. ओह या I didn't even क्योंकि think वैसे ही about this. उनको नजरिया आपको वैसे ही ताड़ रहे. Yeah.
भले जिस भी आप शेप साइज फॉर्मेट। यार मेरा तो वो भी है कि एक तो मुझे ताड़ते हैं दिला, हम ऐसे नहीं ताड़ रहे थे, हम मोटी लड़कियों को नहीं ताड़ते ऐसे, तो देखा क्यों? या दे गो थ्रू सो मच कंफ्यूजन. प्लीज गो इनटू माय कमेंट सेक्शन बिकॉज़ हाफ द बॉयज आर लाइक ये भैंस है, ओके, ये अगर मुझ पे बैठ गई तो मैं मर जाऊंगा. I'm like, why are you imagining me sitting on बट you? आप मेरी प्रोफाइल पे क्यों हो? I'm like, और फिर आप ये इमेजिन क्यों कर रहे हो? हाँ, I was like, जब मैं मोटी हूँ तो निकल जाना आगे. नहीं, तू तेरा एक हाथ इतना बड़ा. I'm like, why are you imagining my hands? Also like, इसके हाथ इतने छोटे हैं. Why are you imagining a hand job? But what is happening with for you? just like जो आप लोग ने स्टार्टिंग देखा, अगर आपने उसमें अंत नहीं सुना तो ये 36 भी बोलती हुई निकली. आप कप्स देखी नहीं थी हमारे तो. The cups. Oh yeah. आप अपना कप What's साइज a cup डिक्लेयर size? करती हुई निकली. Just letting you know. ये क्या बॉयज अगर आप ट्रिगर्ड हैं तो प्लीज कमेंट्स नहीं, ब्रास भेजिए. लेकिन क्यों ट्रिगर होंगे आप? अरे यार बहुत ट्रिगर हो जाते हैं यार. और मैंने तो रिसेंटली एक वीडियो पे तो सिर्फ ट्रोल आ रहा है. I'm like, भाई, I think something I was talking about some dating story of mine and they've just gone like, इसे कौन डेट करेगा? I'm like, okay. First तो ऐसा है, हाँ चलो regular trolling. Then I'm like, oh, you guys are really upset that I went on a date with possible foreigner. They're like, oh, तुझे foreigner चाहिए, तू इंडियन को डेट नहीं करेगी. नहीं, मैं करके हो गया. मैं वो भी कर लूं, ऐसा नहीं है ऐसा. पर मैं ये भी खुल के बोल नहीं सकती कि मैं तो किसी को भी डेट दे रहा है. ओ मोटी हो गई स्लट भी. हमने, अरे तुम हर जगह से क्यों मार रहे हो गाइस? दिस इज लाइक, डिसाइड कर लोगे क्लासिज्म करना है, रेसिज्म करना है, क्या करना है, फेमिनिज्म, या मतलब जो भी. they were like, तुझे हम डेट नहीं करेंगे पर तू मुझ पे बैठ सकती है. हमने, दिस इज वियर्ड. एक पिक करो, या तो मैं डेट करूंगा, बैठूंगी, क्या करना है? चाहिए कि दुनिया को बताना है. हाँ, मैं कल बता दो तुझे, अभी नहीं. और अगर उनको अटैक करूं, आंटे ले लेती हूं इन लोग को. मैं तो बात ही नहीं करती. अब तो रिप्लाई भी नहीं करेगी ना, तो मैं क्या कहूं अभी? यू नो, बट ओके, सॉरी, साइड व्हिच आई हैव रियलाइज्ड इन लॉट ऑफ माय बिग girlfriends or big female acquaintances is that boys love to keep us as a secret sometimes. Like it's the fetish sometimes. I don't think कि partners इसीलिए भी छुपा रहे हैं क्योंकि of course you're ashamed, but the shame also comes from सामने वाले क्या बोलेंगे, especially when you're really young. तो like मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, shit, oh my god. But then also some of it comes from कि like लड़के नहीं introduce करते लड़कियों को जब तक उन्हें नहीं पता कि मैं इसी से शादी कर रहा हूँ. You know, they don't introduce their बंदियाँ so much, but I still don't think that's a reason. My gut knows this, that I'm like, oh, you want to keep me as a secret, and that reason is multiple. It's either shame और इट्स आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस. मुझे तो सच में पसंद है, लेकिन टीवी ने मुझे सिखाया है कि मेरी बंदी तो रानी मुखर्जी फ्रॉम कोई मिल गया होनी चाहिए. यू नो, इट्स कोई मिल गया सॉन्ग, नॉट द मूवी. सो इट्स सो मेनी एंगल्स टू इट दैट यू डोंट रियलाइज. सो आई थिंक ताड़ना वो भी है कि एक तो बिग गर्ल्स को ताड़ लो यार, बट लाइक डोंट, नॉट क्रीपीली, बट डोंट गिव अस लाइक. ताड़ने के बाद बोला हमने नहीं देखा. I saw. मैं आप लोगों को एक सुपर पावर बताता हूँ जो लड़कियों के पास होती है. जब आप ऐसा देख रहे होते हो और फिर आप सडनली जैसी उनकी आंख आपको देख लेती है, आप 3 दुनिया देखते हो जब. And I'm like, and मैं literally मैं कितनी बार खड़ी रही हूँ and I've turned and the boys' eyes are on my ass and I'm like, ऐसे नहीं नीचे कुछ गिरा. हमने नीचे कुछ गिरा है. थोड़ा हाइट कम देख ले भाई, तू हाइट गिर गया भाई, तेरा ओपिनियन गिर गया. हाँ क्या हो रहा है बता, बड़ा है यार. हमारे पास एक बहुत सुंदर स्पेशल सेगमेंट है, सुपर पावर्ड बाय क्लोविया. वी ब्रेक द टैबू अराउंड lingerie basically. Yeah. And Clovia offers a solution based lingerie for 9 body types and 50 plus sizes. Okay. Yeah. So we talk about this so that their tagline, which is happy is my superpower, Yeah. also makes sense to a lot of men watching this. Yeah. So tell me this कि आपके हिसाब से फिर परफेक्ट बॉडी का क्या डेफिनेशन है? You know, मैं जितना भी बाकियों को ब्लेम करूं कि वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं खुद को भी तो ट्रोल करती रहती हूँ जब देखो. Like I'm never satisfied with anything, or I hate my body every day. Yeah. Like it's you know, it's insane because ये हुडी यूजुअली मैं एक्सेल पहनती हूँ, ठीक है, और मेरा हुडी किसी ने ले लिया. तो इनाक्षी हु वर्क्स विद मी, शी सेड मैं एक भेजती हूँ पर मेरे पास मीडियम ही है ये, तो आप पहनना. ऐसे मीडियम कैसे फिट होगा, मुझे थोड़ा ना मीडियम फिट होगा. मैंने पहन लिया, मीडियम मुझे फिट हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली. And today is that is your win for the day. No, what I thought was something is wrong with the hoodie. When I was like, have they marked this as M, but it's actually XL because this doesn't make sense. And I'm still thinking, I'm like, something is up. Maybe I should let the merch people know कि hoodies आप लोग गलत ये कर रहे हो और आप लोग ठीक से उसे mark करो. I'm still not believing that I won a medium. I thought it'll make you like have a great day. Tomorrow, no, not today. Today I'm just doubting. I was like, it's very. Today you you're know, the entrepreneur. By vendor को बोलो. Entrepreneur. First entrepreneur. Second also like मुझे थोड़ी ना medium fit होगा. It's second. Third, it's also the mentality of, you know,
the K3J that line is there, no, that Anjali's where she says that वो मेरी दुकान हड़पना चाहता है, where she's like कहीं वो हाँ तू सही कह रही है, वो मेरी दुकान हड़पना चाहता है. Never or ever in the point where that could make me feel nice about myself. Yeah. Always about the fact that there is some factor that is going to ruin this moment. So You don't have the answer. I don't have the answer. Only thing I know is, as much as there's a lot of negativity, I know I'm a work in progress. Like I am, and I think most women are that way. Yeah. And I've realized that as much when I started working out, when I started taking care of my body, leave the weight loss. Actually, it wasn't a lot of weight loss, but it's just I started respecting the fact that there was ये मेरा शरीर है. yeah, and there was real happiness that I could do movement. Like अभी मैं जब workout के लिए जाती हूँ, I play football, which is insane. Where nobody would ever take me in a football team. मैं ऐसा नहीं कि रोनाल्डो की तरह नहीं खेल रही मैं. I'm fuck all only, but just to think that my body is capable of it, and I always thought that it's a slog and it can't do it. It really makes me happy that way. So as much as there are days where I'm sad, this is where female best friends really work out. Like yes, I think last week or something, मैं कुछ तो change कर रही थी. I remember Sumaira just looked at me and she's like, "You've lost a lot of weight." She's like, "Your body looks so different." It wasn't a compliment. She gave an observation, and she didn't say it as a wow, तू इतनी अच्छी लगी है. She said, "Oh, all your work is, whatever you're working towards is making your body look fitter." And she didn't say it in a जब आजकल हम बोलते हैं कि हम fit होना चाहते हैं, हम lose नहीं करना. She said it so naturally that it made me clinical observation. Yeah, it made me feel nice. She said, "Oh, even I should get fitter." No, yeah, makes sense. And because she's a thin girl, and I was like, I can't believe you equalized me with you. Yeah, inspo मैं है तेरी. Yeah, like imagine. I said that's great. Like, am I even? So I think when it comes to loving body, it's like it's a situationship. Yeah. And it has to be a situation that needs to be converted to regular, friendly, fun relationship. Yeah. As a big girl, Yeah. going and shopping for lingerie, Yeah. how conscious were you there? What was the experience like? How has it evolved over the years? For me, very early on, like I think college, the moment I went to hostel. So the moment I entered girls' hostel, it just like you look at different types of lingerie, you're like, oh, मैं ये भी. Like in fact, मेरी window shopping मेरे hostel के वो जो कपड़े जहाँ पे सुखा रहे थे ना, वहाँ पे हम like ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. Because I was wearing simple white stuff that my mom. I was like, oh, colors होते हैं, ये होते हैं. So lace होता है. Yeah, lace तो बहुत बाद में आया. चलो ठीक है, because वहाँ की लड़कियाँ lace and all they used to hide and keep. Because it's also छुपा हुआ, no. And I'm very conscious about my body. But inside I'm like, I'm a rock star. तो मैं बहुत ऐसे multi-color, multi-material. तो मैंने lingerie मेरी मैंने सेट कर दी थी कि मैं तो अच्छी lingerie पहनूंगी. Very cool. हाँ, because दिखता नहीं है और कोई मुझे मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता. Confidence and how you feel when you walk. 100% I do. And 100% I love because people come to me for recos saying that कहाँ से खरीदूं बता. And I'm like, I've got this. Yeah. Like because girls are very strap दिख गया, they're like, and it's insane because we see one strap, we're like, oh my god. Oh, velvet or something. We immediately know what the bra is. You're into prints? Oh my god. So I'm the person people ask if which one should we pick up. So that really gave me like, I've got this. So lingerie was very early on. At the right time, I think, figured out. No, but like how difficult, because we've heard from a lot of women that finding the right size can be an issue. तो वो भी एक पूरी ordeal है ना अलग. Yeah, it's a full ordeal also, like, because it's the matter of cup, it's a matter of size. Because and getting tested every year. Yeah, you have to. You 100% have to because your boobs are mostly mismatched. एक ऊपर एक नीचे है. And also just full discomfort. No, you're wearing it the whole day. And a lot of women also get used to pain. And then suddenly when it's comfortable, they're like, bra गलत है. I said, नहीं. आपके पति ने आपको पीटना छोड़ दिया है. आप खुश हैं. The normal has changed for you. The dark humor aside. I'm so sorry. Very important line there. Crazy edit. सुमन की आपका एक वीडियो मैंने देखा था, dissecting sports bra and different bras. Oh my. लड़की लोग का ब्राओं के साथ love hate relationship है क्यों? Because it's pretty also, it's painful also. अगर मैं ना पहनूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्ल्स कुछ ज्यादा ही फ्री हो गई हैं. फिर मैं पहनूं तो मुझे लगता है कि गर्ल्स कुछ ज्यादा ही अंदर है. तो it's a very back and forth. Like again, sports bra again. Big fan of sports bra, पर मैं you get conscious कि sports bra makes you look smaller. It's just so much kitsch we have so much inner monologues ना. But we're a big fan of it. अगर आप वो monologue हटा दो तो हम क्या हैं? फिर हम फुटबॉल की scores follow up करेंगे? Never. I'd rather have this monologue
than anything. It's a proper love-hate relationship for sure because we are very like, God se main bra nahi pehnungi. Ooh, fuchsia bra. I want it. It's a roller coaster for sure. कॉमेडी में औरत लोग का कितना रिस्पेक्ट है, कितना कदर है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है? Dude, now तो it's a great place also. It's also different kind of. अभी बात ये आती है कि अभी different voices हैं. Like the USP is not you're a female comic और सिर्फ एक female comic नहीं है. Like okay, you don't like Sumukhi, but there's a Prashasti Singh. Now there are different, like there's Swati Sachdeva, or there's like a Shashi, or there's like Jia. और वो there's- श्रीजा है, फिर वो There's अलग ही बज रही है, Shrija. वो Oh my अलग ही कुछ god, बज रही there's है। Shrija, or there's like a Sumaira who's going on a different tangent. So there's so many now options for you to like, which is great for us. यानी कि इन सबके अपने अपने सर्कल्स अभी आ रहे हैं जो एक साथ इकट्ठा होकर एक बड़ा सर्कल बनेगा. You know, because I've realized a lot of male comics have what they've done very smartly is that they're one giant pool that gets split between all the boys. And of course the girls also, but like अगर like Zakir का अगर 10,000 है, so okay then that 10,000 translate to a lot of comics as 1,000, 500, 100. Like Zakir को अगर 10,000 पसंद करते हैं तो किसी और को 100, which is such a nice distribution of people. And I think we were taking people from this group. Yeah. And it now becomes you have your own. It becomes really tough. So now we have that. And Plus, your own. Yeah, our own. Like everyone likes you for your voice rather than oh वो comedy करती है वो, you know that it's no ये sales inquiry आपके लिए आई है. It's not an open inquiry. हाँ. तो like that's a या very उन्होंने लास्ट मिनट मना किया तो आप आ जाओ. exactly. अब last minute अगर मैंने मना किया तो female comic के पास जाएगा. That's great. Hey, super. Yeah, so I was like, Such oh, a good time. Yeah, which is very good. So and I think it has taken a long time because. लेकिन है पे पैरिटी है. Yeah, 100%. आप लोगों को पता है Yeah, पता है. कितना डिफरेंस है? 1:10 काफी है, difference है. 5:10 है, I would say between 1:4 to 8. 4:8. It depends on the occasion. Like Women's Day पे तो नहीं होगा. Women's Day पे तो हमारा 1:10. हम 10 है वो 1 है. But and which is sad. But otherwise, हाँ, there's major pay parity. Also because pay parity तो है यार. कॉमेडी करते समय आप लोगों को खुश कर रही हो, लेकिन अंदर की खुशी और साथ का वेलबींग वो हैंड इन हैंड नहीं रहता है तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है उस दिन स्टेज पे होना, क्योंकि यू आर डिलीवरिंग दिस like piece which you've rehearsed, maybe done a bunch of times, but you're not happy inside. So is there a quandary there? It used to be कि अगर दिन खराब जा रहा है तो शो पे दिख जाता है. कभी कभार होता भी है यार. Recently कभी तो हुआ था मेरा where my day was just terrible. What happens is I think initially वो बहुत हावी हो जाता था तो performance अच्छा नहीं होता था. But अब क्या हो रहा है कि ये समझ आ गया कि अगर दिन खराब गया है यानी कि शाम को मैं गुस्सा होने वाली हूँ. Which means that today my open mic or show is going to be very ranty, which is great. Everyone loves me when I'm ranty. Or if I'm very sad, in fact मेरी जो current show है hormonal, it's a lot of funny and it ends on a somber sad note. So if in fact I am sad on that day, oh my show is going to go great. Because it's going to lead to the perfect 100%. Because my last 20 minutes, I never write, I never rehearse. I have the premise on that day, whatever I feel, I say it. Yeah. Otherwise, it's just very not right. Now I've reached a stage where can I use the emotion of the day on stage? Like that it's very tough, but I think I'm enjoying it that much. So, but 100% effect होता है यार पूरा दिन अगर बर्बाद प्रैक्टिस होता ना. है. हाँ. इतना टाइम कर लिया है ये हाँ. कि इनर हैप्पीनेस प्लस प्रैक्टिस मेक्स यू रीच समवेयर. Actually, can I tell you more than other people's mood or our mood on that day? What really messes up a lot of comics, and this is male and female, is that on that day, if we are on self-sabotage mood, अगर तुमने laugh दिया, हम लेंगे ही नहीं. Who are you to laugh at our jokes? Yeah, it's just this unnecessary fight because you're in a fucking terrible mood and you just pick a fight with an audience member. But if audience members saying something, I'm like, तुझे क्या पता? तू कौन होता है? And it's not even them, it's more like मैं पसंद नहीं हूँ आज, तो don't make it about yourself. So I think that happens to a lot of comics where comics just go villain. यार strong independent women बड़ा यूज होता है, तो इसका आपके लिए इसका आपको क्या मीनिंग? It's a great segue for me to give you an anecdote. I remember मैं एक रीडिंग में थी, मैं नरेशन कर रही थी एक पिक्चर की, कैरेक्टर की वॉइस ना मैं ऐसे रीड कर रही थी कि पर मेरे पास है ये, and I remember the people in the room were like, no, but that's, that how can that person's dumb. I said, why is that person dumb? They're like, but that voice they have. I said, so many women with that voice are very smart. Yeah. And they're like, no, it's like she needs to be strong. I'm like, what is strong? They're like that your voice is strong. I said, first of all, I sound like Usha Uttup, not like she's not strong. She's badass. Yeah, but what has one got to do with the other, right? So I think this concept of strong, independent woman for branding purposes is a certain image.
And I think strong independent woman should be something that if you are able to feel your power, then that's what it is. डेटिंग शेटिंग रोमांस स्कूल में Dating? Romance? Oh my god, मुझे पता है ये specific चीज याद है सिर्फ because तब शुरू हो गया था ऐसे like ओ लिंक हो रहे हैं सब लोग लिंक हो रहे हैं वो वर्ड काफी जा रहा था and I was massively big girl like insanely big girl तो I remember कोई तो लेटर आया था सबको और कहा था कि कॉन्फिडेंशियल सिर्फ पेरेंट्स को ओपन करना है तो हमारे क्लास के बच्चे तो चूती है ना तो oh my god लिंकअप्स के बारे में हमारे पेरेंट्स को बताने वाले as if really प्रिंसिपल का काम धंधा नहीं है ना तो दे लाइक शिट हम ओपन कर लेते हैं हम देख लेते हैं हमारा नाम है क्या लिंकअप्स में तो मैंने भी कहा हाँ मुझे भी देख लेना चाहिए और एक मुझे याद है वो लड़के का मैं उसका लड़का नाम नहीं लूंगी उसका तेरा नाम क्यों लेगा कोई दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम ओनली अच्छा हुआ तो इन सबसे हट गई इतनी मोटी निकली अच्छा हुआ तेरा एंड इट वाज वेरी बॉय सो लाइक बॉयज डोंट अंडरस्टैंड तो ही डिडंट से इट लाइक तू मोटी है वो अपने फॉर हिम ही इज कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस या फॉर हिम ही इज लाइक डोंट वरी you are not part of this list because you are ugly this list is only for hot people I was just मुझे अभी भी याद है वो that's one and second my mom's damn चालू हाँ I remember मैं 11th-12th में ना एक कोई foreign बंदा आया था I think he was an exchange student from Nigeria or something and we met at some event cultural event or something and he was very like oh Sonki so nice to meet you will you come out for a coffee and all I was like no I don't want to come out for coffee okay मैं घर आई वापस and I was like मम्मी कॉफी नहीं बोला मैंने मना कर दिया she's like I've raised you well don't go for coffee okay and she's very like she was genuinely very happy with my body form because North especially is very like yeah they're very like मोटी लड़की तो भाई होती है पतली लड़की तो बेब होती है I'm like okay I guess but है ऐसा नॉन नेगोशिएबल डेट पे oh yeah now I have a non-negotiable बताओ finally भाई, is because boys really try to put me in my place ये बहुत होता है क्या yeah now and I didn't notice this and I'm noticing ये क्या बात है यार where they're very like क्या करती है तू हाँ ऐसा क्या करती है say oh you're doing stand up I'm better I'm funnier So first I give it to be like चल ठीक है तू nervous है then I'm like मैं भी तो nervous हूँ बच्चा मैं तो नहीं बोल रही ना तुझे कि मैं तेरा काम बेहतर कर सकती हूँ बैंकर है हाँ it's very that or it's very like oh people know you okay I said that's weird why would you say that on a date even if I was not a comedian why would you say that that's fundamentally something is off no I didn't come and say I'm better than you so random just have a good time also just I'm good बोलना yeah I'm very you have to be kind you have to be empathetic you have Great to non-negotiable. you have to be kind empathetic and by kindness I mean that if I'm taking the effort of making you feel nice about yourself on a date because dates are first of all date is such a great place to have like it's fun effort डालो yeah like leave okay chalo you dress the way you want to and it's fine but treat me nicely because I'm treating you nicely so empathy and kindness is very high so you have to have this एक नया आइटम आया है मार्केट में लव बॉम्बिंग yeah आपको मालूम है क्या होता है yeah क्या होता है it's when you really I think just correct me if I'm wrong but it's when I'm very into you like I text you every day I call I'm like oh like I'm fully giving you all the attention okay and then we meet for a date and then we hook up and then I have vanished तो मतलब सेक्स करने का नया तरीका है I think so or I mean it's also for some boys I hear because I've spoken to some boys who go like they genuinely feel that they are expressing what they want to feel but अगले दिन कट क्यों लिया फिर that's because it was too much vulnerability it was too much exposure of feelings and then there's fear of hurt and they're like shit हमने ज़्यादा कर दिया some boys are also like most boys are doing it actually maybe girls are also doing it sorry but are you like this like hyper energy girl always yeah it came from somewhere do you remember you being like I don't think I was this hyper and energetic in school I don't think so I mean I was chatty but I was never hyper and let's go yeah I was not this I was slightly shy and anxious and very तो कब खुल रही थी आप because shy plus bullied yeah plus continuously hearing about body yeah can be more yeah I went boxing inwards for yeah anybody. correct yeah my mom was very happy कि home science कर रही हूँ मैं and I was interested in food science always yeah फिर मैंने पता किया चेन्नई में एक कॉलेज MOP वैष्णव करके वहाँ पर फूड साइंस है और मैं लिटरली लाइक विदाउट इवन ब्लिंकिंग विदाउट इवन बैटिंग एन आईलिड जो मैंने अपना इफ यू कॉल माई मदर नाउ इवन नाउ शी येल एट यू बिकॉज मैंने मम्मी से पूछे बिना अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन कार्ड आ गया था मेरी मम्मी के हाथ में लग गया था और जो मेरी लगी थी भाई माय मॉम्स कॉल्ड मी एंड देन शी सेड कि एडमिशन कार्ड आ गया ये एंट्रेंस का कार्ड आ गया ऐसे कौन सा एंट्रेंस मुझे तो नहीं पता और मेरी पटरी यहाँ पे ऐसे शिट मम्मी के हाथ में आ गया तो फिर मैं गई एंड देन माय मॉम आल्सो रिवर्स्ड इट शी वाज वेरी स्मार्ट शी सेड ओह यू वांट टू गो स्टडी आउटसाइड शी सेड यू वोंट बी एबल टू डू इट शी सेड तुझसे होगा ही नहीं और नाले मुड़ियादु डोंट डू इट शी सेड बट इफ यू वांट टू फेल यू कैन सो देन आई वाज लाइक what is she right then I was like fuck it just जा तू पहले एंट्रेंस दे और मैं अपने पापा को लेके मैंने एंट्रेंस खत्म किया
मैंने तब भी मेरी पेपर करेक्ट कराई. Even now my HOD remembers that where Usha is like that woman. I was like, here's my paper. She said, I will tell you in 1 week. I said, no, now. I have only 1 day. मुझे नागपुर वापस जाना है. आप अभी करेक्ट करो. So in a day I finished like my admission and all of that, and I just left. So small bouts of hustle. Yeah, that was my first moment of hustle. I remember that moment of getting into that college was my first hustle. And the moment I got into that college, it was it really that place. I think I'm the one of the few people who's like, Chennai was the best part of my life. Everyone's like, Chennai sucks. I'm like, it is the best. Those 3 years changed everything. यार सोशल मीडिया थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी सेट किया है ना परफेक्ट बॉडी का. ब्यूटी स्टैंडर्ड कौन बना रहा है? वो होता है ना कि बोलने के लिए तो हम बोलते हैं कि हाँ मैं तो सारे बॉडी टाइप्स पसंद है, पर हम कास्ट तो पतली लड़कों ही करते हैं ना मूवी में. इट्स वेरी दैट. सो आई थिंक इट्स अ वेरी बोलने के लिए बोलना, एंड देन अल्टीमेटली यू पुश द कंटेंट दैट दे लाइक, whatever people want to watch, that's what it is. People want to watch hot girls, people want to watch hot boys. Full stop. मैं तो फनी कैरेक्टर है, मैं बेस्ट फ्रेंड. हाँ, they're very like once in a while. If you're really funny, really ugly, 100%. So if I push myself as I'm so ugly, Mark Zuckerberg, come on, you're ahead of algorithm now. So I think it's also, and that really conflicts in everything. I'm laughing because it's true. Yeah, it just conflicts in everything. तुम अपने पे काम कर रहे हो, but you're like अभी algorithm में भी आओ, and I fuck it now. But जितनी लड़की लोग देख रही है, how do you feel confident in whatever shape and size and dimension you may be in? Right now, I do feel confident in. I mean, I have my moments. कैसे emulate करने का? I feel the trick with me was I'm not in a hurry. Like I don't say कि अब जब मैं confident हूँ, अब मैं कुछ और हो ही नहीं सकती. Impossible. In a moment, I'm 50 people in my head. So I think it's impossible for me to maintain the confidence throughout. Some days you are low, some days you're high, but then overall, do you like yourself? Then that's that. And also, मैं मरने वाली हूँ कब? At least in 30 years, I'm going to die. For the next 30 years, I want to cry about this only. I can't. It's very boring. So I want to change my narrative. In fact, that's where it changed. Where I was like, okay, for the next 30 years, my legacy or my comment cannot be that, oh, here's a girl who hates herself. It's too much. So I was like, I'm going to change that narrative. So yeah. Good job. आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिंदगी का कोई PCOD है आपको? PCOD को मैं हूँ. मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी. कभी पता चला, कैसे पता चला? मुझे प्रॉपरली पता चला very recently at 33. I have always had PCOD. In fact, the first period I got was late and I was insulin resistant from 16 and I never knew. इसीलिए my reproductive health has just been terrible. My metabolism is terrible. Everything is just affected. There's just so many hormones and you think that metabolism has got to do with आप कितना खा रहे हो, आप कितना workout कर रहे हो. Of course है. 100% है, but it's also got to do with internally how well. वो एक extra organ है जिसका हम कदर ही नहीं करते. We all, every day we wake up in the tryst of being part of a system which is so biased. We forget that there is that organ that's really either suffering or helping or enjoying. The moment that awareness came, and I was like, okay, cool, this is truly an issue and this is truly a lifestyle disorder. Leave that. There is no cure for PCOD. There is no proper set pattern of medication or treatment for PCOD. There are different theories about it. Generally, औरतों पे कितनी रिसर्च है? Fuck all. आप लोग प्लीज कमेंट्स में हमसे ज्यादा ज्ञानी In fact, बैठे for हैं. that, if men could have periods, तो the research बढ़ जाएगा. My constant conversation with Aparna is that, where she's like, there's no reproductive. चलो रिसर्च तो बड़ा टर्म हो गया ना. जो जब भी आप रिसर्च बोलते हैं ऐसा लगता है वो तो साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है. बट लिटरली मी एज अ पर्सन, आई एम लाइक मुझे पीरियड नहीं आ रहा. And my first go-to, and I'm an educated person, is like, शायद मेरे लिए बना नहीं है. If you're not getting your period, you just think that you're less of a woman. कि तुम्हें नहीं आ रहे, तुम औरत नहीं हो. तो it's just so much of politics within that you don't even realize your first instinct कि कहीं पे लगा है तो डॉक्टर के पास जाओ. यहाँ पे अगर मुझे कहीं पे लगा है तो हम लगे ये तो मुझे होना ही था. So there's so much of victim in it that we don't even logically think that hey maybe there's something wrong. और मैं सोच रही थी तो मैं अभी मैं इतना struggle नहीं करती मेरे metabolism के साथ. If I would have known this at 16, 17, imagine my life would have been easier. But you said barren, so you cannot have children? I cannot have children. My AMH is like, AMH is one of the indicators of how viable are your eggs. And mine is like 0.2 and the range is. So even if you freeze your eggs, it won't do nothing? I have none to freeze. None to freeze. So I have like imagine there's a shell there, 2 shells that are chilling. But that was some time back, but yeah, chances of me freezing my eggs is no point because there's none. And it's cool. I don't think Did you want to have children? No. You didn't want to have children? I didn't want to have children. Why? I see. I don't know. I'm very surprised. It's not like I don't like to have children, but I don't want children, I think. Marriage?
Marriage I want. Marriage I want. I don't mind adopting also because my mother, my younger brother has been adopted by my aunt. In my head is constantly like there's a child that my mother gave away. ये पहले बहुत होता था ना. Yeah. So I was like, okay, so I should also accept and receive at someone. वो मेरे दिमाग में है, but then yeah, marriage yes, kids no. Coming to the closure of our thing, feminism आपके लिए क्या है? Feminism is it's like one of the things that you do or one of the things that you have. It's like eating. It's like breathing. It's like it's जिंदगी. It's basic respect. It's not even something you should demand. Equality is so basic. And opportunities and involvement in space. एक to ऐसा एक situation आ जाए जहाँ पे मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े और जहाँ मुझे बस मिल जाए क्योंकि मैं वो डिजर्व करती हूँ. That would be ultimate. ताकि मैं वो झगड़ा ना करूं, वो एक पैसिव अग्रेसिव झगड़ा या फिर एक जगह पे जहाँ पे मुझे पता है कि ये सेक्सिज्म है पर कोई नहीं मानेगा मेरी बात क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है वो. बिकॉज द थिंग अबाउट सेक्सिज्म इज सो सटल. It's what is read between the lines. Yeah. So the day that vanishes, oh, that'll be such a victory for feminism. कितनी फाइनेंशियली लिटरेट हो, कितना इन्वेस्ट करती हो, कहाँ करती हो? Oh, I'm very recent finance literate. Recent, no? अगर 5 years हो तो recent ही होता है ना. And I was very started with FD. पहले तो सब कुछ savings account में था क्योंकि Safe. हाँ, क्योंकि यही रहना है. And also you get used to seeing the number कि मेरे account में इतना पैसा यानी कि मैं खुश हूँ. तो एक वो था. Now and then slowly went to FDs and now it's mutual funds and now it's proper experiment. diversified portfolio and now I'm like should I put money on companies? But उसके लिए I'm going to make some more money and then I'll start investing in business. कैसा लगा आपको? कितनी सारी बातें कर ली ना? बहुत बहुत सारी. Yeah, this was just but it also felt like I'm just hanging with you. सुमुखी, हमारे ब्रांड पार्टनर क्लोविया ने आपके लिए बहुत कुछ अमेजिंग हैम्पर बना के भेजा है क्योंकि हैप्पी इज माय सुपर पावर उनका happy कहना. is my superpower. Actually, sadness, but it's okay. But there is happiness and sadness. आप खोल के देखना चाहते हो? Thank you so much. Ooh, oh, look at this. I did not expect this. I love it. Thank you so much, Clovia. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट. आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा बताएं. बाकी आप लोगों को पता है सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो कर लो Please. मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम बैन. दिस इज द मेल फेमिनिस्ट एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हाउ टू फ्लाई. बाय.